Assalamu alaikum. It's been a long time since I haven't come on this screen, so I thought let's do it now. ये फर्स्ट क्राई से आया था. This is the package, and can you guess what it could be? Okay, let me not keep you do so much of a guess. तो ये जो है मंगाया गया था. थोड़े दिन पहले हम लोगों ने वीडियो भी पोस्ट किया था. सोनू उसका जो लड़का है, क्या नाम रखा उसका नाम, वी विल नॉट रिवील इट एज ऑफ नाउ, हम लोग बाद में बताएंगे. तो उसने जो है ये मंगाया. एक्चुअली हिज वाइफ असलिहान, उसने जो है ये मंगाया फर्स्ट क्राई से. दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ गिफ्ट फॉर द बेबी. और ये थोड़ा सा किसी को मालूम भी नहीं था. व्हेन इट केम सब लोग सरप्राइज़ हो गए थे कि मतलब क्या है इस बॉक्स के अंदर. और फर्स्ट क्राई वगैरह से जो है मंगाया गया है, तो मतलब कुछ बच्चे का ही होगा, लेकिन किसी को मालूम नहीं था. एवरीबडी वाज एक्साइटेड. अस्मा वाज आल्सो एक्साइटेड कि मतलब क्या आया है. उस दिन हम लोग भी घर पर ही थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग की जाए एंड वी शेयर दी फीलिंग्स विद यू कि मतलब क्या है इसके अंदर. तो एज यू कैन सी, you can start guessing by now what could be inside. अच्छा, और ओके, तो फर्स्ट क्राई एज यू माइट बी अवेयर, वहाँ पर बच्चों की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फ्रॉम द बेबी बॉर्न टिल 4 or 5th ईयर्स. तो ये अच्छा, can you guess the design by now? I think yes, you can make it out. और ये come here, show here. And this is the final piece. तो I'll show you how it looks. ऐसा ये सही है, हाँ. और वो वाला, this will become the final piece. तो ये बेबी का जो है उसके कपड़े रखने के लिए, और कपड़े हो गए, कुछ कुछ चीज़ें हो गई, उसको रखने के लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं बनाए गए. इट इज़ फुली मेड ऑफ प्लास्टिक बट इट इज़ वेरी ड्यूरेबल. और बहुत सारे लोग इसको ऑर्डर भी करते हैं व्हेन इट इज़ देयर फर्स्ट बेबी. तो इसके लिए उन्होंने ये ऑर्डर भी किया. आई विल असेंबल इट एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. बट एट द प्राइस ऑफ 6,000 rupees ऑलमोस्ट, इट्स pretty nice and looks clean. Also the baby, when he will grow, he'll look at it and he'll be actually be more happy. तो एक ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हो जाता है कि मतलब कपड़े कुछ यहाँ रखें, वहाँ रखें, वहाँ रखें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. वो सब जो है मतलब यानी इट विल नॉट मेस अप. और अब लोगों के कपड़े फिर सब बच्चे के कपड़े मिक्स हो जाते हैं. दैट विल नॉट हैपन एंड इट विल लुक क्लीन एंड नाइस. सो आई विल असेंबल इट एंड देन आई लेट यू नो हाउ इट लुक्स. So this was the final touch that we give, and this looks nice. See, from all sides it looks like this. So it seemed very easy when it came, and I thought that I'll be able to do it within 5 minutes or 10 minutes, but it took me actually 30 minutes. So with patience I was able to assemble it finally. I think it looks gorgeous. Not gorgeous, it is indeed gorgeous. It looks good. Baby will feel good when he looks at it.
It has keys, Baby Hug, the company branding, white, and this color combination also looks good. This was it. I'll make a video on different topic soon, which you'll, I think, appreciate. Thank you so much.